And now it gets even more complicated. So what if हमने decimals का square root ढूंढना है? So what is a decimal? Decimal is a recap, quick recap. एक decimal कोई भी number होता है जिसके points में लिखा हुआ होता है कोई number. So this is a decimal, this is also a decimal, and we keep going. So कोई भी number जो एक whole number नहीं है, जो मतलब टूटा हुआ है हिस्सों में, just like fractions. And in a way you could say कि fractions को हम decimals में लिखते हैं और decimals को हम fractions में भी लिख सकते हैं. So they're the same thing पर एक different तरीके में लिखे हुए होते हैं. So what if we have to find the square root of a decimal? So let's say we have 1.1, right? And हमने इसका square root ढूंढना है. And the way to do this is हम इस decimal को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे. और जब हम इस डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, देन हमें पुरानी वीडियो से, इससे पिछली वीडियो से पहले ही पता है कि फ्रैक्शंस का स्क्वायर रूट कैसे ढूंढते हैं. दैट्स इजी. न्यूमरेटर के अलग से ढूंढे, डिनोमिनेटर के अलग से ढूंढे. सो द ओनली हार्ड पार्ट हियर इज कि इस डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है. एंड द वे वी डू दिस इज कि हम पॉइंट की राइट साइड पे जितने भी नंबर लिखे हुए हैं हम उनको नोट करते हैं कि वो कितने हैं. सो इन दिस क्वेश्चन पॉइंट की राइट साइड पे दो नंबर्स लिखे हुए हैं. सो दैट्स 1 एंड दैट्स 2, राइट? सो इफ अगर दो नंबर हो तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि हम इस सारे नंबर को पहले तो लेंगे और इसके अंदर से पॉइंट हटा देंगे और उसको एक न्यूमरेटर के तौर पे लिख देंगे. सो लाइक सो आई टुक द सेम नंबर, मैंने उसी सारे नंबर को उठा के न्यूमरेटर में लिख दिया पर मैंने पॉइंट हटा दिया उसके दरमियान से. नाउ स्टेप नंबर 2, कितने नंबर्स थे हमारे राइट साइड पे डेसिमल पॉइंट के? 2, राइट? सो हम 1 लिख के जितने नंबर्स राइट साइड पे थे पॉइंट के राइट साइड पे उतने जीरोस लगा देंगे 1 के आगे. सो इन अदर वर्ड्स हम 1 लेके उसके आगे उतने जीरोस लगा देंगे जितने नंबर राइट साइड पे होंगे उसके. सो इन दिस केस 2 थे तो हमने 2 जीरो लगा दिया. अगर 3 होते तो मैं यहाँ पर 1 के आगे 3 zeros लगा देता, but that's not the case. This time it's 2. So there we go. हमने 121 को एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके 121 by 100 बना दिया. And now this step is easy, right? आपको फ्रैक्शन वाली वीडियो से पता है कि अगर आपने इसका स्क्वायर रूट ढूंढना है then all you need to do is कि आप न्यूमरेटर को अलग से इसका स्क्वायर रूट ढूंढ लें और डिनोमिनेटर का अलग से ढूंढ लें. So let's do it. 121. What is the smallest number जो 121 को कर ले? Well, that turns out to be 11. So we take 11 times 11. That's it. So we can write this as 11 times 11 and square root 100. इसी तरह से. So if you take 100, 2 times 50 times 2. एंड अगर आप एक रो में वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं तो अभी आपको याद होगा कि अभी हमने अभी बिल्कुल इस पिछली वीडियो में यही किया था. सो नाउ स्मॉलेस्ट नंबर जो 25 को कर ले वो 5 है. अगेन सो we're left with 2 times 2 times 5 times 5 square root. All right, so 11, that would be 11 squared, and this would be 2 squared multiplied by 5 squared. Now what do we do? आगे क्या करें? Well, square root के साथ cancel हो जाएंगे, and in the next step we get 11 times 2 multiplied by 5, which would be 11 by 10. So we're not done yet though, because हम decimals का square root निकाल रहे हैं तो हमें जरूरी है कि जो हमारा आंसर है वो भी हम डेसिमल में लिखें. But right now हमारा आंसर fractions में लिखा हुआ है. So in a way we technically हम ढूंढ चुके हैं कि 1.21 का स्क्वायर रूट क्या है. Well, it turns out to be 11 by 10. पर हम ये स्क्वायर रूट चाहते हैं कि हम डेसिमल फॉर्म में ही देखें. So and I'm sure you remember this from class 7 कि
किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं. सो द वे टू डू दिस इज कि जो न्यूमरेटर है उसको आप डिवाइडेंड बना लेंगे, मतलब वो नंबर जो डिवाइड हो रहा है, which would be 11, एंड जो डिनोमिनेटर है उसको आप बाहर लिख देंगे यहाँ पर. इन अदर वर्ड्स आप उसको डिवाइजर बना लेंगे एंड देन यू जस्ट सॉल्व, जैसे आप डिवीजन की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. सो सिंस 10 की टेबल में 11 तो आता नहीं है, सो द स्मॉलेस्ट नंबर जो सबसे करीब पहुंचेगा 11 के, that would be 1 times 10. 1 10 is 10. Alright, then we would be left with, अगर हम इसे माइनस करें तो हमारे पास 1 बच जाएगा. Now the problem is कि हम 1 को 10 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 1 छोटा है. So here's what we're going to do. Because 1 10 से छोटा है, हम अपनी तरफ से एक 0 लगाएंगे. पर here's the thing, जब भी हम मैथ में अपनी तरफ से कुछ करते हैं तो हमें उसके बदले में कुछ और करना पड़ता है. एंड इन दिस केस अगर हम अपनी तरफ से 0 लगा रहे हैं तो हमें ऊपर एक पॉइंट लगाना पड़ेगा. एंड वी डिड दैट. सो वी हैव 1 point. एंड नाउ हाउ मेनी टाइम्स 10 is 10? 10 10 10 1 is 10. So we have 1.1 एंड हमारा आंसर यहाँ पर एंड हो जाता है बिकॉज हमारे पास 0 रिमाइंडर है. सो इन अदर वर्ड्स आपने अपनी फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर दिया डेसिमल में और उसका आंसर बना 1.1. सो दिस इज योर आंसर. अगर आप 11/10 को डेसिमल में लिखना चाहें, इट टर्न्स आउट टू बी 1.1. एंड द स्क्वायर रूट 1.21 का स्क्वायर रूट बनता है well 1.1. All right, let's do one more question. Okay, so let's take a hard one. Okay, let's say we have 0.1089. So हमारे पास 0.1089 है. And step number 1, हमने इस डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में. So what do? We count the numbers जो कि डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे. कितने नंबर्स हैं? 4. Alright. So हमने 1 के आगे 4 0 लगा देने, which turns out to be 10,000. Okay, and we keep going. जो ये नंबर है सारा का सारा, इसको हम न्यूमरेटर में लिख देंगे पर पॉइंट हटा के. एंड here's the tricky part. अगर आप पॉइंट हटा के लिखें then it turns out to be something like this. Well, you're probably thinking कि अगर हम पॉइंट हटा दें तो फिर इस जीरो का तो कोई फायदा नहीं है, बिकॉज ये जीरो हमें कुछ पता नहीं रहा यहाँ पर. So we're just going to get rid of that zero and हम 1089 लिख देंगे. Now since ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, now all we need to do is कि हम इसका अलग-अलग स्क्वायर रूट ढूंढ लें. So 1089 square root of 1089. Well, हम इसको डिवाइड करके देखते हैं. Well, if we divide this by 3, it turns out to be 363. Alright, and अगर हम इसे दोबारा 3 से डिवाइड करें तो ये बन जाता है 121. Well, we already know because we just did it कि 121 को हम 11 से डिवाइड कर सकते हैं, which turns out to be 11. And there we go. So next step, what do we have? We have 3 times 3. जितने भी लेफ्ट साइड पे नंबर हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें और उनका स्क्वायर रूट ले लें. And now what about our denominator? हम अपने denominator को देखते हैं. So we have 10,000 and we're going to divide this. So हम 2 से शुरू करते हैं. Well, that turns out to be 5,000. अगर इसे हम 2 से करें, that turns out to be 2,500. 2,500. इसको अगर हम करें 2 से तो ये 1250 बनता है. एंड दैट्स फाइन, यू नो. अगर आप शुरू में ये कर रहे हैं इतने बड़े नंबर्स को डिवाइड तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा एंड मे बी इवन आपको साइड पे रफ वर्क में इसको करना पड़े, बट विद प्रैक्टिस आपकी स्पीड तेज होती जाएगी. एंड अगर आप 1250 को 2 से डिवाइड करें, दैट टर्न्स आउट टू बी
625. Now 625 को सबसे छोटा नंबर 5 डिवाइड कर सकता है, and that turns out to be 125. and अगर आप 125 को 5 से करें, that turns out to be about 24, 25, I believe. Yes, it is. And आप इसको दोबारा 5 से करें, 5 5s are 25, and we're almost at the end. Now this is a long one. So we have 2 times 2 times 2 times 2 and 4 दफा 5 जो अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है. Okay, and then इस सारे का स्क्वायर रूट. So what do? We see कि हम कितनी दफा 3 squared लिख सकते हैं. Well, we can write 3 square एक दफा, 11 squared एक दफा, square root of that. And now how many times can we write 2 as 2 squared? Well, 1 2. इसी तरह से 5 को भी हम 2 दफा लिख सकते हैं. So that would be 2 squared multiplied by 2 squared, 5 squared by 5 squared, and हम इस सारे का square root ले लेंगे. So the next step, all the squares get cancelled. सारे के सारे squares cancel हो जाएंगे क्योंकि हम उनका square root ले रहे हैं. And हमारे पास एक और वीडियो इसकी होगी जिसके अंदर मैं एक्चुअली कॉन्सेप्चुअली आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एक्चुअली स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होते क्यों हैं. बट फॉर नाउ, टू सेव टाइम, हम इसको कैंसिल कर देते हैं और हमारे पास बच जाएगा 3 times 11 by 2 times 2 times 5 times 5. Okay, we're running out of space here. Now 3 times 11 is 33, and 2 times 2 4, 5 times 5 25, and 4 25s are 100. But हमारा आंसर यहाँ पर खत्म नहीं होता. Remember, we are finding, हम डेसिमल्स का स्क्वायर रूट ढूंढ रहे हैं. सो हमें आंसर भी डेसिमल्स में चाहिए, स्क्वायर फ्रैक्शन में नहीं. सो जस्ट लाइक द लास्ट क्वेश्चन, हम 33 को अंदर रखते हैं और उसे डिवाइड कर देते हैं 100 से. well actually we need a bit more space. All right, there we go. Well, since हम 33 100 से छोटा है तो हम 33 को 100 से डिवाइड नहीं कर सकते, पर what we can do is कि हम अपनी तरफ से एक जीरो लगा सकते हैं. पर अगर हम अपनी तरफ से जीरो लगाएंगे तो हमें एक पॉइंट लगाना पड़ेगा. एंड नाउ हियर्स द थिंग, पॉइंट के लेफ्ट साइड पे अगर कोई नंबर ना हो तो हम हमेशा जीरो लगाते हैं वहां पर, या फिर इन अदर वर्ड्स वहां पर हमेशा जीरो होता है. सो वी वुड राइट 0 पॉइंट. पर अगर इस पॉइंट के पीछे पहले से कोई नंबर होता तो फिर मुझे जीरो लगाने की जरूरत नहीं थी, मैं सिर्फ पॉइंट लगा सकता था. ओके, लेट्स कंटिन्यू. सो हाउ मेनी हंड्रेड्स इज 330? वेल, 100 की टेबल में 330 नहीं आता, पर हम करीब पहुंच सकते हैं. हम अगर 100 को 3 से कर दें तो 300 हो जाएगा. well minus 30. now again 30 100 से छोटा है, so what do? हम अपनी तरफ से एक जीरो लगाएंगे. And now here's the thing, it would be a mistake अगर आप दोबारा पॉइंट लगा दें इधर, because that's just weird. okay, ये कोई नंबर मैथ के अंदर नहीं होता. so जब आप एक दफा पॉइंट लगा चुके हो तो आपको दोबारा पॉइंट नहीं लगाने की जरूरत, और आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं. so आपने अपनी तरफ से एक जीरो लगाया, that's fine. now just think कि 100 की टेबल में 300 कब आएगा? well जब आप उसे 3 से दोबारा करेंगे, and that's it. Zero remainders. So आपका answer turns out to be 0.33. So the square root of 0.1089 is 0.33, which is the same thing as this. The only difference is कि हमने उसको fraction form की जगह decimal form में लिख दिया.